द एक्सपेक्टेशन ऑफ फेथ एक डिस्कोर्स है जो कीरकेगार्ड ने 1843 में पब्लिश किया एज पार्ट ऑफ हिज कलेक्शन कॉल्ड टू अपबिल्डिंग डिस्कोर्सेज। कीरकेगार्ड ने टू अपबिल्डिंग डिस्कोर्सेज अपनी किताब आइदर और की पब्लिकेशन के 3 महीने बाद पब्लिश किया, जिसमें ये कंक्लूड नहीं हुआ था कि जो आर्ग्यूमेंट था बिटवीन ए द एस्थेट एंड बी द एथिसिस्ट कि व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू लिव वंस लाइफ, बट दैट वाज काइंड ऑफ नॉट द पॉइंट दैट कीरकेगार्ड वाज ट्राइंग टू मेक विद द बुक। वो चाह रहा था कि जो रीडर है वो डिटैच करे अपने आप को ऑब्जेक्टिविटी से, आउटवर्डनेस से, और वो इनवर्ड टर्न करे और वो सब्जेक्टिविटी पर फोकस करे, क्योंकि फॉर कीरकेगार्ड सब्जेक्टिविटी वाज ट्रूथ। 1832 में ईगल ने एक आर्गुमेंट स्टार्ट किया कि नॉलेज इज़ नॉट समथिंग हर्टफुल टू फेथ बट हेल्पफुल, और फिलॉसफी विच इज़ द लव ऑफ नॉलेज इट हैज़ द सेम कॉन्टेंट एज रिलीजन। हेगल चाह रहा था ये दिखाने के लिए कि इंसान अपना बिलीफ इन गॉड बेस कर सकता है ऑन नॉलेज रादर देन फेथ। लेकिन कीरकेगार्ड का इंटायर पॉइंट ये था कि ईच सिंगल इंडिविजुअल शुड एक्ट आउट देयर फेथ बिफोर गॉड। फेथ इज़ नॉट वॉन बाय मेंटल टॉयल, वो एक पर्सनल स्ट्रगल से आप जीतते हो एंड विद द हेल्प ऑफ गॉड। कीरकेगार्ड steers his readers away from the outer world of observation to the inner world of faith, and that is his entire point with his work. कीरकेगार्ड की जो मेन किताबें हैं उसकी जो pseudonymous works हैं they are more concerned with philosophy, लेकिन उसके जो discourses हैं जिनमें से ये discourse of the expectation of faith they concern themselves more with theology और वो अपने किसी स्यूडोनिम के अंदर नहीं लिख रहा, वो अपने नाम के अंदर सोरन कीरकेगार्ड के नाम से पब्लिश करता है अपने सारे डिस्कोर्सेज, वाइल उसके जो मेन किताबें लाइक आइदर और स्टडीज ऑन लाइफ्स वे वो एक स्यूडोनिम के अंदर पब्लिश करता है। एंड दैट्स द इंटायर पॉइंट दैट इज ट्राइंग टू मेक कि ही इज़ फर्स्ट अ रिलीजियस राइटर, अ स्पिरिचुअल मेंटर यू कैन से, एंड देन अ फिलोसोफर और देन अ पोइट और देन अ सोशल क्रिटिक। कीरकेगार्ड का जो कैरेक्टर है आइदर और के अंदर ए द पोइट, उसको वो कंपेयर करता है टू द अपबिल्डिंग स्पीकर इन दिस डिस्कोर्सेस। इन दोनों में फ़र्क ये है कि जो पोइट है ही हैज़ नो एंड और गोल इन हिज माइंड अदर देन साइकोलॉजिकल ट्रूथ एंड द आर्ट ऑफ प्रेजेंटेशन, जबकि जो स्पीकर है इन एडिशन ही हैज़ द एम ऑफ ट्रांसपोजिंग एवरीथिंग इनटू द अपबिल्डिंग। जो पोइट है वो इतना एब्जॉर्ब्ड है इन द पोर्ट्रेयल ऑफ हिज ओन पैशन कि उसको और कुछ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जो अपबिल्डिंग स्पीकर है फॉर हिम दिस इज़ ओनली द बिगिनिंग एंड द नेक्स्ट इज़ वेरी क्रूशियल फॉर हिम, विच इज़ टू कंपेल द स्टबर्न पर्सन टू डिसआर्म और टू मिटिगेट टू क्रॉस ओवर इनटू द अपबिल्डिंग। अब इस अपबिल्डिंग का मतलब क्या है? व्हाट डज एडिफाइंग और अपबिल्डिंग मीन टू कीरकेगार्ड? कीरकेगार्ड की नज़र में टू बिल्ड अप इज़ टू प्रीसपोज लव, टू बी लविंग इज़ टू प्रीसपोज लव, क्योंकि उसकी नज़र में ओनली लव बिल्ड्स अप। To build up is to erect something from the ground up, but spiritually, love is the ground of everything. No human being can place the ground of love in another person's heart, yet love is the ground and we build up only from the ground up. Therefore, we can only build up only by presupposing love. Take love away, then there is no one who builds up and no one who is built up. ये जो discourses हैं, along with all the other discourses, they begin with a dedication, and these are dedicated to the father of Kierkegaard. In these words, to the late Michael Peterson Kierkegaard, formerly a clothing merchant here in the city, my father, these discourses are dedicated. Kierkegaard ने किसी भी discourse में अपनी mother को mention नहीं किया, but only his father. This has remained a history with many Kierkegaard scholars as well, of why Kierkegaard has never mentioned his mother even once in his journals as well. इसके बाद एक प्रीफेस होता है इन डिस्कोर्सेस के अंदर, फॉलोड बाय अ प्रेयर अटैच्ड टू सम ऑफ द डिस्कोर्सेस। ये जो प्रीफेस है ये डेडिकेट किया कीरकेगार्ड ने टू दैट सिंगल इंडिविजुअल दैट ही कॉल्स एज माई रीडर। वो कहता है, although this little book, which is called Discourses, not Sermons, because its author does not have authority to preach upbuilding discourses, not discourses for upbuilding, because the speaker by no means claims to be a teacher, wishes to be only what it is, a superfluity, and desires only to remain in hiding, just as it came into existence in concealment, I nevertheless have not bidden in farewell without an almost fantastic hope.
Inasmuch as in being published, it is, in a figurative sense, starting a journey, I let my eyes follow it for a little while. I saw how it wended its way down solitary paths or walked solitary on public roads. After a few little mistakes, through being deceived by a fleeting resemblance, it finally met that single individual whom I, with joy and gratitude, call my reader. That single individual it is seeking, to whom, so to speak, it stretches out its arms, that single individual who is favorably enough disposed to allow himself to be found, favorably enough disposed to receive it, whether at the time of the encounter it finds him cheerful and confident or weary and pensive. On the other hand, inasmuch as in being published it actually remains quiet without moving from the spot, I let my eyes rest on it for a little while. It stood there like a humble little flower under the cover of the great forest, sought neither for its splendor nor for its fragrance, nor its food value. But I also saw, or thought I saw, how the bird I call my reader suddenly noticed it, flew down to it, picked it, and took it home. And when I had seen this, I saw no more. कीर्केगार्ड की एक बड़ी हम्बल एक्सपेक्टेंसी थी इन डिस्कोर्सेस को लेकर. उसकी एक ये उम्मीद थी कि कोई सिंगल इंडिविजुअल, कोई रीडर इसको उठाएगा, इसमें इंटरेस्ट लेगा, इसको पढ़ेगा. और 5 साल बाद उसने लिखा, आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ दिस वर्क ऑब्वियसली, कि आइदर और को लोगों ने बड़ा पढ़ा और बड़ा प्रेस किया, बहुत डिस्कस भी किया, लेकिन ये इन 2 डिस्कोर्सेस को स्पेशली किसी ने इनको इतना सीरियस नहीं लिया, एंड नो वन कंसर्न्ड हिमसेल्फ अबाउट दैम. कीर्केगार्ड के एक दोस्त ने किताब ख़रीदी उससे, और उसने फिर कंप्लेन किया कि इट इज़ नॉट क्लेवर इनफ, इट इज़ नॉट रिटन इन द वे दैट हिज अदर सिडोनिमस वर्क्स आर रिटन. कीर्केगार्ड ने उसको उसके पैसे वापस दे दिए बेसिकली. आइदर और उसकी बाकी जो सिडोनिमस वर्क्स हैं वो एक इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन पे चलते हैं, बट ये जो डिस्कोर्सेज हैं दे आर डायरेक्ट कम्युनिकेशन. इन दोनों मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन का अल्टीमेटली सेम एम है, to make aware of the religious, the essentially Christian. ये जो discourse है, the expectancy of faith, it begins with a short biblical passage. फिर it moves on to explore the nature of faith, और वो बात करता है कि faith क्या रोल प्ले करता है in the lives of individuals. कीर्केगार्ड कहता है कि हर इंसान एक स्ट्रगल में मुब्तला होता है अपने साथ, बेशक उसको इस बात का पता हो या ना पता हो. उसके अंदर ये नेचुरल इंक्लिनेशन होती है, नीड होती है एक, कि वो एक लाइफ व्यू फॉर्मुलेट करे, एक कंसेप्शन फॉर्मुलेट करे, एग्जिस्टेंस, बीइंग, लाइफ इट सेल्फ का क्या मतलब है, क्या मीनिंग है, क्या पर्पज़ है. कुछ लोग ये मीनिंग फाइंड करते हैं इन मेंटेनिंग हेल्थ, इन डेवलपिंग टैलेंट और अर्निंग मनी, बिकमिंग रिच एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स, जिनको वो कंसिडर करता है एज वर्ल्डली गुड्स, एज आउटर गुड्स. और हर इंसान इसी दौड़ में लगा हुआ है कि इन आउटर गुड्स, इन वर्ल्डली गुड्स में कुछ वो हिस्सा अपना सिक्योर करे. लेकिन कीर्केगार्ड कहता है कि फेथ इज़ द हाइस्ट गुड. ही सेज दैट इन दीज वर्ड्स, फेथ हैज़ अ डिफरेंट क्वालिटी. इट इज़ नॉट ओनली द highest good, but it is a good in which all can share. And he who rejoices in his possession of it rejoices also on behalf of countless generations of men. For what I possess, he says, that every man possesses or may possess. He who wishes it for another man wishes it for himself. He who wishes it for himself wishes it for every man. For that quality by virtue of which a man has faith is not one in which he is different from another man, but that wherein he is identical with him. That whereby he possesses it is not something in which he differs from others, but something in which he is absolutely identical with everyone else. कीर्केगार्ड यहाँ पे कह रहा है कि फेथ ना सिर्फ हाईएस्ट गुड है ज़िंदगी में जो आप जिसके लिए स्ट्राइव कर सकते हो, बल्कि ये ऐसा गुड है जो हर इंसान शेयर कर सकता है. हर इंसान के अंदर एक इनहेरेंट क्वालिटी है कि वो इस गुड को अचीव कर सकता है. No one ever has to struggle with another to gain faith. One must struggle only with oneself and with God. Kierkegaard कहता है, It was a new glory in faith that no man can give it to another, but that what is highest, noblest, most sacred in man, that every man has. It is inherent in him. Every man has it if he wills to have it. And this is the glory of faith, that it can only be had on this condition. Therefore, it is the only unfailing good because it can only be had through being constantly acquired and can only be acquired through being constantly developed.
कीर्केगार्ड कह रहा है कि फेथ एक ऐसा गुड है, एक ऐसा हाईएस्ट गुड है जो आप किसी और इंसान को नहीं दे सकते. वो इंसान भी और आपको भी खुद ही ये अपने अंदर कॉन्स्टेंटली एक्वायर करना पड़ेगा थ्रू कॉन्स्टेंटली डेवलपिंग इट. वो कह रहा है कि इट इज़ अ ड्यूटी टू हैव फेथ एंड नॉट टू हैव फेथ इज़ अ सिन. एन इंडिविजुअल पुट्स ऑन ड्यूटी, क्योंकि ये जो ड्यूटी है इट इज़ नॉट आउटसाइड हिमसेल्फ बट विद इन हिमसेल्फ. कीर्केगार्ड की डेफिनेशन ऑफ सिन भी यही है कि इट इज़ द ऑपोजिट ऑफ फेथ. द कंडीशन ऑफ नॉट हैविंग फेथ इज सिन इन द माइंड ऑफ कीर्केगार्ड. अब कीर्केगार्ड ये कहता है कि किसी और इंसान को आप फेथ नहीं दे सकते जस्ट बिकॉज ही हैज़ टू मच रिस्पेक्ट फॉर हिम टू जस्ट विश faith into his being. He says, if I with my wish or with my gift could present him, that is another man, with the highest good, then could I also take it from him, even if he need not fear this. What is worse, if I could do this, then I should, in the same moment that I give it to him, take it from him. For in the fact that I gave him the highest good, I took the highest good from him. For the highest would be that he should give it to himself. Therefore, I will thank God that this did not happen. My love has only lost its anxiety and gained gladness. For I know that with all my efforts, I still should not have been able to preserve this good for him, as certainly as he himself can keep it. He will not have to thank me for it, not because I set him free, but because he owes me nothing at all. Early existential writers ने भी इसी थिंकिंग को डेवलप किया along this same line of thought. डेलमोर श्वार्ट्ज की कोटेशन है, no one can take your bath for you. मार्टिन हेडिगर कहता है, no one can die your death for you. और रूडोल्फ बल्टमैन भी यही कहता है, no one can hold your faith for you. कीर्केगार्ड पर एग्जामिन करता है कि how different reactions to life's conditions are affected by whether an individual has faith or not. When the world begins its sharp testing, when the storms of life snap the vigorous expectation of youth, when existence which seems so loving and so gentle transforms itself into a merciless proprietor who demands everything back, everything which he gave so that he could take it back, then the believer looks with sadness and pain at himself and at life, but he still says, there is an expectation which all the world cannot take from me. It is the expectation of faith, and this is victory. I am not deceived, for what the world seemed to promise me, that promise I still did not believe that it would keep. My expectation was not in the world, but in God. This expectation is not deceived. Even in this moment, I feel its victory more gloriously and more joyfully than all the pain of loss. If I lost this expectation, then would everything be lost? Now I have still conquered through my expectation, and my expectation is victory. अब ये उसने जो व्यू बयान किया कीर्केगार्ड ने, वो ये व्यू है कि एक इंसान जिसके दिल में फेथ होता है, he will not expect anything from the world, he will not expect anything from another individual, लेकिन उसकी एक्सपेक्टेशन है एक्सपेक्टेशन ऑफ फेथ की, और इस ये एक्सपेक्टेशन ही इन इटसेल्फ विक्ट्री है, क्योंकि ही इज़ turned inward, he's rejected outwardness, and he's had this subjective approach that by having faith, he will win in the end. Lekin on the other side of this is that the person who does not have faith, he loses whatever he has of it when things go bad. He says, when everything changes, when grief supersedes joy, then this individual falls away. He loses faith, or more correctly, let us not confuse the language, he then shows that he never had it in the first place.